Good afternoon, everyone. I am Vivek Banerjee. I will be taking today's session on counseling session on financial services and capital markets, which is elective paper 6B of the CA final course. Some of the queries have come, which I will be taking first. And during the course of this session, if you have any question, please feel free to ask. The first question, which actually the query which came to us, is that the pattern of the elective paper. Many of you are aware regarding this pattern of this financial services and capital market paper, but I will mention it again so that those who are not aware can get a grasp of this pattern of this elective paper. Actually, it is an open book examination. Open book examination. It means that you can carry any material with you. Okay. And that material may consist of your study material, which is part A, and also the SEBI regulation, because SEBI regulations are also very important, so that you can carry part A, part B of your study material, and any other thing which you think that may be relevant during the course of the examination, you may carry those also. Any other book you may carry, any material you may carry during the course of this paper. And this paper consists of 4 hours. 4 hours. And before 4 hours, 15 minutes will also be given to you for actually reading the question paper. So during this 4 hours, you have to attempt 4 case studies. Actually, there will be 5 case studies. Out of which you have to attempt 4. Okay, and each case study consists of 25 marks each. Okay, and the marking system is 25 marks each, 4 case studies, 100 marks. And what is the weightage? Weightage of descriptive questions and the multiple choice questions. The weightage of descriptive question is 60%, and the weightage of multiple choice question is 40%. For example, each case study comprises of 25 marks, then 15 marks will be descriptive, and 10 marks will be for MCQs. Okay, so this is the pattern. So this descriptive, you can say, consists of 60%, and this MCQ portion 40%. Okay, and so this is the summary. This is the open book examination. You can carry any material with you. 4 hours paper, 5 case studies, out of which you have to attempt 4. Each case study consists of actually 25 marks, and 60% weightage for descriptive question, 40% weightage for multiple choice question MCQs. So that is 15 marks for descriptive and 10 marks for multiple choice question. So this is the basic pattern of the, you can say, examination. Another question which has been asked by some of the students, that how to prepare for this subject. As you know, this is a very specialized subject, financial services and capital market. And if you go through the financial newspapers, you will see that most of the financial news actually related to this paper, financial services and capital market. Any good financial newspaper you can take, for example, Economic Times, Business Studies, I will write it down also. Economic Times, Business Standard, Live Mint, Business Line. You may ask that which one to pick. You can take any one of them. I recommend you to read at least 2 out of these 4, because I personally read try to read Economic Times and Business Standard daily.
So you can pick any one, either Economic Times Live Mint or Business Standard Live Mint or Business Line Live Mint. Any two of them will serve the purpose on a daily basis, regular basis, so that you can be aware of, you can be abreast of the latest, you can say, happenings which are taking place in this field. Another thing is that besides this financial newspapers, and one obvious thing is that you have to read the study material very thoroughly, which is part A, and also the SEBI regulations, which is part B of the study material. So, study material, part A, part B, and the various financial newspapers. You can, as you know, it is an open book examination. You can carry your study material, SEBI regulations also. But I will recommend you to go through the SEBI regulation at least once, because if any questions comes from, for example, ICDR, issue of capital requirement, disclosure requirements, or LODR, or insider trading, or buyback, or mutual funds, it will take some time to go through the material and pick the particular regulation which apply to a particular question. So if you go through all the regulation, all these 5 regulations, ICDR, LODR, insider trading, mutual funds, and buyback, you will be able to, you can say, scroll through the, you can say, the study material very quickly. आप study material को जल्दी देख पाओगे. तो मैं यही recommend करूँगा आप सबसे कि एक बार आप SEBI regulation जो part B है उसको एक बार जरूर पूरा पढ़ें. तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज कहाँ पे है. फॉर एग्जाम्पल, अगर ICDR से कोई क्वेश्चन आता है तो आप क्वेश्चन को देख के तुरंत आप उस पर्टिकुलर पोर्शन पे आप जा सकते हैं. अगर आपने बिल्कुल भी नहीं देखा है SEBI रेगुलेशन, एग्जामिनेशन के टाइम पे अपने साथ रख लिया है, तो आपके लिए डिफिकल्ट होगा, थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा उस पर्टिकुलर रेगुलेशन पे पहुंचने में. इसलिए एक बार आप SEBI रेगुलेशंस को पूरा जरूर देखें, और पार्ट 1 को आपको थॉरली एक बार पढ़ना ही है पूरा अच्छे से. इसके अलावा फाइनेंशियल न्यूज़पेपर डेली बेसिस पे पढ़िए, तो आपको कंटेम्परेरी एस्पेक्ट जो है इस फील्ड में पता लगते रहेंगे. मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि कंटेम्परेरी एस्पेक्ट से आप क्या मीन करते हैं. अगर आपने रिसेंटली न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, बिजनेस स्टैंडर्ड है, इकोनॉमिक्स, कोई भी फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स, तो LIC का जो IPO है, इनिशियल पब्लिक ऑफर है, वो लाइमलाइट में है. So why this is LIC IPO is in limelight? Because it is the largest IPO till date. 21,000 crore का ये particular ये IPO है, और इसमें एंकर इन्वेस्टर्स का काफी रोल है. तो एंकर इन्वेस्टर्स पे कोई अगर कंटेम्परेरी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसको बता सकते हो. तो आपको इस चीजों पे लगातार स्टडी करते जाना है. मैंने एग्जांपल लिया है, तो थोड़ा सा इसको हम डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं. जैसे एंकर इन्वेस्टर होते कौन है? एंकर इन्वेस्टर्स आर दोज इन्वेस्टर्स व्हिच एक्चुअली एड द इनिशियल पब्लिक ऑफर. इनिशियल पब्लिक ऑफर को सपोर्ट, हेल्प भी प्रोवाइड करते हैं. किस तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, किस तरह से हेल्प प्रोवाइड करेंगे? वो क्या करते हैं, जिस दिन एक्चुअली इशू ओपन होना रहता है उसके एक दिन पहले कुछ पर्टिकुलर पोर्शन वो सब्सक्राइब कर लेते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, LIC का जो IPO है वो कब ओपन हुआ? LIC का IPO जो ओपन रहेगा वो रहेगा 4 मई to 9 मई. ठीक है. तो एंकर्स इन्वेस्टर्स के लिए एक रूल बनाया गया है कि जिस डेट को IPO ओपन होगा उसके एक दिन पहले वो एंकर इन्वेस्टर्स कैन सब्सक्राइब टू द इशू. तो उन्होंने सब्सक्राइब किया एंकर इन्वेस्टर्स ने 2 मई को. 2 मई को. अब आपको क्वेश्चन होगा कि एक दिन पहले सब्सक्राइब होना चाहिए, क्योंकि इशू तो ओपन हुआ आज ओपन हुआ है 4 मई को. तो 2 मई को एंकर्स इन्वेस्टर्स को क्यों इशू किया गया? क्योंकि वो एक दिन की छुट्टी थी ईद की, कल की, इसलिए वो 2 मई को यानी मंडे को एंकर्स इन्वेस्टर्स को वो इशू किया गया. और जो एंकर इन्वेस्टर को इशू किया गया वो एक्चुअली ओवर सब्सक्राइब हुआ है. तो एंकर्स इन्वेस्टर्स जो है वो कौन है? एंकर्स इन्वेस्टर्स आर दोज इन्वेस्टर्स व्हिच एड द इनिशियल पब्लिक ऑफर. नाउ अगर इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस आते हैं, फॉर एग्जांपल कि एंकर इन्वेस्टर कितना पोर्शन ले सकते हैं,
तो ये भी आपको आना चाहिए। तो ये चीजें जो है सभी रेगुलेशंस में दी हुई है। अगर आप आईसीडीआर को एक बार गो थ्रू करेंगे तो आपको ये मालूम चलेगा। पर आपको अगर याद नहीं भी आ रहा है तो एक बार अगर आपने गो थ्रू कर लिया तो तुरंत आप उस पर पर्टिकुलर रेगुलेशन पे आप पहुंच सकते हैं। तो एंकर इन्वेस्टर्स, कितना पोर्शन एंकर इन्वेस्टर्स को इश्यू हो सकता है? हाउ मच पोर्शन? दैट इज 60% of the amount issued to qualified institutional buyers। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं, तो 60% पोर्शन जो है वो एंकर इन्वेस्टर्स को आप इश्यू कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, हु आर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स? ये भी आपको पता होना चाहिए। तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, any one of you who are qualified institutional buyers, if you want to answer this question? The qualified institutional buyers are basically, you can say, mutual funds, okay, pension funds, provident funds, foreign portfolio investors or venture capital funds, ठीक है, etc. So these are actually qualified institutional buyers. तो qualified institutional buyers के लिए जो 60% anchor investor वो ले सकते हैं। तो then how much it should be? It should be actually 60% of the amount issued to qualified institutional buyers. So how much you can say qualified institutional buyers can invest in a particular IPO? The answer is 50%. 50% investment. 50% investment can be made by, मैं इधर पे शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूं जिससे QIBs you can say, QIB, that is qualified institutional buyers. तो 50% जो पोर्शन है इन्वेस्टमेंट कैन बी मेड बाय, यू कैन से, QIBs. सो एंकर इन्वेस्टर का कितना हुआ? अगर 50% ऑफ द टोटल इशू, 50% ऑफ द इशू साइज, यू कैन से, आपको और क्लैरिटी आएगी इसमें। 50% of the issue size can be made by qualified institutional buyers. So 50% का 60%, you can say 30%. So 30% of the 30% of the issue size. 30% of the issue size. So what is 30% issue size? This investment can be made by anchor investors. Okay. So what is the concept of anchor investors? Anchor investors are those investors which help the initial public offer, which aid the initial public offer. किस तरह से हेल्प करते हैं? कुछ इशू, इनिशियल पब्लिक ऑफर ओपन होने से एक दिन पहले कुछ पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो सब्सक्राइब कर लेते हैं। जब ये पर्टिकुलर पोर्शन सब्सक्राइब कर लिया तो इससे कंपनी को, इन्वेस्टर्स को क्या फायदा हुआ? कंपनी को ये फायदा हुआ कि उसकी मार्केटिंग बढ़ गई। मतलब अगर एंकर इन्वेस्टर्स जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, किसी भी पब्लिक इशू पे अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये कंपनी के लिए एक मार्केटिंग वो टूल हो जाता है और इन्वेस्टर्स में कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने इसको परचेस कर लिया तो हमें भी इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे LIC के केस में जो एंकर इन्वेस्टर्स हैं वो ओवर सब्सक्राइब हो गए। मतलब जितना एक्चुअली एंकर इन्वेस्टर्स के लिए पर्टिकुलर था, लिमिट थी, उससे ज्यादा जो है एंकर इन्वेस्टर्स ने उसमें इन्वेस्ट कर दिया। तो ये एक
पॉजिटिव सिग्नल जाता है इन्वेस्टर्स को, यस कि LIC के IPO में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा एंकर इन्वेस्टर्स जो है वो LIC के IPO में इन्वेस्ट कर रहे हैं. सो दैट इज व्हाट द एडवांटेज ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू द कंपनी. कंपनी के लिए एक मार्केटिंग टूल होता है, कुछ पोर्शन भी उसके सब्सक्राइब हो जाते हैं, और इन्वेस्टर्स के लिए कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है कि यस इनिशियल पब्लिक ऑफर में इन्वेस्ट करना चाहिए. कितना अमाउंट एंकर इन्वेस्टर्स को अलॉट हो सकता है? 60% ऑफ द अमाउंट इशूड टू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स. हु आर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स? Qualified institutional buyers are basically big investors such as mutual funds, pension funds, provident funds, foreign portfolio investors, venture capital funds. All these are called as qualified institutional buyers. तो qualified institutional buyer का 60% portion जो है वो एंकर इन्वेस्टर को अलॉट हो सकता है. और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स कितना IPO में इन्वेस्ट कर सकते हैं? वो 50% ऑफ द इशू साइज. फॉर एग्जांपल अगर 10,000 करोड़ का IPO है तो वो 5,000 जो है उसमें कर सकते हैं इन्वेस्ट. फॉर एग्जांपल आई विल टेक एन एग्जांपल, 10,000 करोड़ IPO. ओके, 10,000 करोड़ IPO. तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स का कितना पोर्शन हो जाएगा इसमें? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स का पोर्शन हो जाएगा 5,000. और इसमें फिर एंकर इन्वेस्टर का कितना पोर्शन हो जाएगा? 30% ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स. एंकर इन्वेस्टर का हो जाएगा 30%. I think it is 1,500. 30% of actually 60% of the portion, so it will come to 3,000. Okay, एंकर्स टोटल अगर इशू साइज 10,000 करोड़ का है, 10,000 करोड़ का है, तो QIBs को 5,000 मिलेंगे, क्योंकि सेबी रेगुलेशंस, ICDR जो सेबी रेगुलेशंस है उसमें दिया हुआ है कि 50% ऑफ द पोर्शन कैन बी यू कैन से सब्सक्राइब्ड बाय द क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स. और एंकर इन्वेस्टर्स में से कितना ले सकते हैं? 60% ले सकते हैं. तो 5,000 को 60%, 3,000. तो 10,000 करोड़ का अगर IPO है तो उसमें से जो 3,000 करोड़, 3,000 करोड़ एंकर इन्वेस्टर जो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनको 3,000 करोड़ जो है अलॉट हो सकता है शेयर्स. तो दिस इज व्हाट इज अबाउट एंकर इन्वेस्टर्स. सो अगर लेटेस्ट ट्रेंड से वाकिफ हो गए तो इस क्वेश्चन को आप आंसर कर सकते हैं. नाउ रिसेंटली कुछ इसमें चेंजेस हुए हैं, आप अवेयर हैं क्या कि एंकर इन्वेस्टर्स के रिगार्डिंग? उसमें एंकर इन्वेस्टर्स जो है, जो भी शेयर्स अलॉट किया गया है, those shares cannot be sold by the anchor investors immediately. For example, जो IPO कब तक ओपन है LIC का? 4th May to 9th May. तो एंकर इन्वेस्टर्स को अगर फॉर एग्जांपल 3,000 करोड़ अलॉट हुए हैं इसमें, तो वो 10th May को सारे शेयर्स जो है नहीं सोल्ड कर सकते अगर प्राइसेस बढ़ते हैं उस सिचुएशन में भी. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्यों ऐसा किया गया है? क्योंकि इससे है रिटेल इन्वेस्टर्स को उसमें लॉस होगा, क्योंकि इतने हैवी अमाउंट अगर एंकर इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया है और सारे अगर वो बेच के निकल जाएंगे तो शेयर्स के प्राइसेस जो है वो कम हो जाएंगे. तो इसलिए एंकर इन्वेस्टर्स के लिए एक रूल रेगुलेशन है कि 30 डे लॉक इन पीरियड. सो एंकर इन्वेस्टर्स द लॉक इन पीरियड इज 30 डेज. लॉक इन पीरियड का मतलब है कि वो 30 दिन तक बेच नहीं सकते. दैट इज उसके शेयर्स जो परचेज किए वो लॉक हो गए, वो 30 दिन तक उस शेयर्स को वो सेल नहीं कर सकते हैं. पर LIC के IPO के लिए गवर्नमेंट ने इस रूल को थोड़ा सा ट्वीक किया है, इस रूल को थोड़ा सा रिलैक्स किया है. क्या रिलैक्स किया है? कि अगर इशू साइज 10,000 करोड़ से ऊपर होता है देन जो लॉक इन पीरियड होगा वो 30 डेज ही होगा. कुछ दिन पहले, मैं इसके पहले बता दूं कि कुछ दिन पहले सेबी ने कुछ रेस्ट्रिक्शन हुए थे कि इफ द इशू साइज इज अप टू रुपीज 10,000 करोड़, देन 50% investment made by anchor investors will be locked up till 90 days. 90 डेज किस डेट से? जिस डेट को उनको अलॉटमेंट हुआ है उस डेट से 90 डेज तक वो लॉक्ड अप होंगे. मींस 90 डेज तक उसको बेच नहीं सकते हैं. और 50% पोर्शन
will be locked up till 30 days. तो इसका मतलब जितना भी एंकर इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया है उसका 50% 90 दिन तक लॉक रहेगा, 90 दिन तक बेच नहीं सकते, और जो 50% बचा उसको भी 30 दिन तक बेच नहीं सकते। इसका मतलब इस पर्टिकुलर एग्जांपल में अगर एंकर इन्वेस्टर्स को 3000 करोड़ अगर इन्वेस्ट किया है तो इसका मतलब 1500 करोड़ 90 दिन तक लॉक रहेगा, 90 दिन तक वो बेच नहीं सकते हैं, और जितने 1500 करोड़ बचे वो 30 दिन तक वो बेच नहीं सकते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेशली एलआईसी के आईपीओ के लिए इस रूल को ट्विक किया है। एलआईसी का आईपीओ कितने हैं? 21,000 करोड़ का आईपीओ है। तो रूल ये बनाया गया कि अगर 10,000 करोड़ से अगर एक्सीड होता है, एक्सीड ₹10,000 करोड़, तो सिचुएशन में क्या होगा? उस सिचुएशन में लॉक इन पीरियड जो रहेगा वो 30 डेज ही रहेगा, मीन्स 90 डेज नहीं होगा अगर 10,000 करोड़ से ऊपर का वो आईपीओ होता है। एलआईसी का आईपीओ 21,000 करोड़ का है, मीन्स 10,000 से ऊपर है, तो इसमें एंकर इन्वेस्टर ने जितना भी इन्वेस्ट किया है वो 30 दिन तक लॉक इन रहेगा, मीन्स वो 30 दिन तक होल्ड करके रखेंगे, 30 दिन के बाद उसको वो बेच सकते हैं। ठीक है, तो ये रूल जो है थोड़ा सा सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिलैक्स किया है, स्पेशली फॉर द एलआईसी आईपीओ, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के आईपीओ के लिए इस रूल को रिलैक्स किया गया। तो वही मैं एग्जांपल दे रहा था कि कंटेम्पररी एस्पेक्ट्स से अगर आप अवेयर रहेंगे, वाकिफ रहेंगे, तो देन यू विल बी एबल टू solve the question if any questions were related to the contemporary aspects. So that is one example. Any questions up to that? Okay, fine. Students, you must have most of you mock test paper also. I have discussed the pattern of the examination. I have discussed how reading the financial newspapers, contemporary aspects will help you during the course of the examination also. So I will take the mock test briefly. If any question come across during this period, please ask at any time during the course of the counseling session. The first question which related to actually factoring. I will rub it. Okay. Okay. Now, the first question mock test paper, if you have gone through, is related to factoring actually. An interesting question. If you have gone through the factoring closely, this question will help you to revise the, you can say, factoring chapter very well. So, I will request you, if you haven't attempted the factoring, any question from factoring, please attempt this question. I will just brief you. Because it is a practical question, I will brief you that please take out the first question of the mock test paper, that is the case study 1. And in this case, you have to compute the amount paid as advance by factor. So, in the question, it is already being mentioned that the advance amount will be, the amount which will be advanced by the factor will be after adjusting reserve, commission charges, and the interest amount. So, in this situation, the interest amount, the commission, and this has been already given to you. This has already been given to you, and it has been mentioned in the question that you can say factor will keep reserve equal to 20% of the amount after adjusting commission and 10% of receivable. So receivable total sales is actually it is given in the question. The total sales is actually 4,000 crore. Annual turnover is 4,000 crore, and 90 days period is mentioned in the question.
90 दिन का वो एक्चुअली पीरियड है रिसीवेबल निकालने का, and 4,000 into 90 days you will calculate, then your receivable will come to 1,000 crore. Okay, 4,000 into 90 upon 360. So your average receivable will be 1,000 crore. And factoring commission, it is given in the question, that is 1.5%. So it will be 1,000. It will be actually 1,000 multiplied by 1.5%. Okay, 1,000 into 1.5%. And 10% of receivable, what is the average receivable? The average receivable is 1,000. So it will be reserve will be 1,000. Reserve will be 1,000 minus 15 minus rupees 100. So it will come to into 15% actually. Into 15%. So it will actually come to 132.75. Okay. So from this, how the advance amount will be, interest amount will become, after deducting this 132.75, which is the reserve, and the this interest amount will become after deducting this from the, I will just, so it will be 1,000 minus 132.75 minus 15. Into 15%. So it will come to actually 132.75 crores. It will be 132.75 crores. Then you have to calculate the interest amount. So interest amount will be 1,000 minus 132.75 minus 15. So 132.75, it is actually the reserve. And 15 is the commission. 15 is the commission. So it is. It will come to 852.25 crores. So what is this amount? 852.25. It is the amount available
amount available before adjusting interest. Before adjusting interest. Now, what will be your interest amount? It is given in the question itself that interest will be, if you go through the question, that it is given in the question that in factor will advance after adjusting reserve, commission charges and interest. So interest amount is equal to this 852.25, that is the amount available before adjusting interest, into 16%. It is given in the question, 16% amount into 90 by 360. So the amount which is actually 818.16 crores. Okay. And what is the amount advanced by factor? Now have to calculate the advance by factor. So it is actually, it will be 852.25 minus 34.09. So 852 this is actually the, what is the 852.25? It is actually the amount which is available for advance, and out of this the interest amount is deducted, which is actually 34 point, interest amount is deducted, which is 34.09. So final amount which come to is 818.16 crores. 3.16 crores. So I have solved the first question. Rest of the question solution is also have been given to you. I just want to give a glimpse of how to go through this question. Okay. So what was the question is that the amount, you have to compute the amount paid as advance by factor. And considering that Saransh Garments, which is the customer, has accepted the proposal of factor. So initially you have to calculate the amount kept as reserve. Then out of this, you have to calculate the interest amount after deducting the reserve and the commission. And then lastly, you have to compute the amount paid as advance by the factor by deducting the interest amount from the amount which has been arrived at after adjusting the reserves. Any questions till now, or I will proceed further, because this solution of practical question has been given to you, so I will not delve into this any further. Okay. So now come to the second part of this second case study, which is actually related to the credit rating. If you go through the case study thoroughly, 3 questions have been asked. The first question is regarding what is a credit rating agency and why they are important. This is a simple question, the answer which is given in the study material. The second question is why credit rating agencies are criticized recently. Okay, and discuss this with the help of the recent instances.
And that is what I have been talking about, that you have to go through the, you can say, contemporary aspect so that you can able to answer these type of questions very thoroughly. Now, credit rating agencies have been criticized recently because of the various factors. The first factor is that the industry analysts have criticized that they actually lack an evaluation tool. That is, the credit rating agencies have not gone proper evaluation tool. क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के पास प्रॉपर इवैल्यूएशन टूल नहीं है जज करने के लिए कि पर्टिकुलर कंपनी जो है जो कि लोन ले रही है, एक्चुअली वो अपने लोन का पैसा वो दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी. दैट इज वन ऑफ द क्रिटिसिजम्स ऑफ द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी. सेकेंड, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के वो है कि दे आर फेसिंग सर्टेन रेगुलेटरी चैलेंजेस, पर्टिकुलर रियल टाइम इंफॉर्मेशन ऑन बैंक डिफॉल्ट. कुछ केसेस में इससे होते हैं कि अगर बैंक के कोई डिफॉल्ट हुआ तो उसको वो तुरंत 30 डेज के अंदर नोटिफाई कर सकते हैं, पर अगर बैंक के अलावा कोई दूसरा डिफॉल्ट हो तो उसको तुरंत नोटिफाई करना होता है. तो ये एक एनोमली इंफॉर्मेशन है. इसका मतलब कोई अगर बैंक को अगर डिफॉल्ट करता है, किसी ने बैंक से लोन लिया वो अगर डिफॉल्ट करता है तो उसकी इंफॉर्मेशन वो है, उसको बैंक जो है, बैंक ने कोई अमाउंट अगर पे किया है, कोई लोन अगर पे किया है, अगर उसके रिगार्डिंग कोई अगर डिफॉल्ट होता है तो बैंक को इंफॉर्मेशन 30 डेज के अंदर दे सकता है, पर बाकी जो कॉर्पोरेट डिफॉल्ट है उसको तुरंत इंफॉर्मेशन दे सकता है. तो इसके रिगार्डिंग एक इंफॉर्मेशन एसिमेट्री है. और कुछ क्रिटिसिज्म क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के रिगार्डिंग ये है कि उनके पास जो है वो प्रॉपर अप्रोप्रिएट इवैल्यूएशन टूल्स नहीं है बिजनेस रिस्क को एक्चुअली इवैल्यूएट करने के लिए. एंड लिक्विडिटी रिस्क प्रॉब्लम है ही, जैसे 2008 का क्राइसिस था वो भी लिक्विडिटी रिस्क की वजह से हुआ था. तो उस वजह से जो है अभी भी वो चीज है कि लिक्विडिटी रिस्क को जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ठीक तरीके से वो मैप नहीं कर पा रही है. तो कुछ इस तरह के क्रिटिसिजम्स हैं. तो आप अगर कंटेम्पररी एस्पेक्ट, रिसेंट एस्पेक्ट रिगार्डिंग अगर आप वाकिफ हैं तो यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन वेरी वेल. The next question in this, the second case study is how the efficiency of credit rating has been increased after the ILFS fiasco. You can say some of the credit rating agencies have taken initiative. जैसे ILFS का हुआ, credit rating agencies का basic criticism जो start हुआ वो ILFS के बाद ही हुआ है. I hope you must have been aware of कि ILFS का basic problem क्या था. ILFS में जो भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स थे उसका ILFS ने उसका पेमेंट जो है नहीं कर पाई थी, जबकि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने उसकी रेटिंग को AAA देकर रखा था. तो विद इन 40 डेज इट्स रेटिंग हैज बीन AAA से वो D रेटिंग पर पहुंच गया ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ओनली 40 डेज. तो ये इस वजह से क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को क्रिटिसाइज किया गया कि वो पहले से वो चीज क्यों नहीं समझ पाई. व्हाई दे वर नॉट अवेयर दैट दिस टाइप ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन, that the ILFS is not able to pay its debts and credit rating agencies were not being aware of this situation. तो उसके रिगार्डिंग कुछ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने इनिशिएटिव लिए हैं. अगर मैं केयर का एग्जांपल दूं, केयर ने जैसे इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चेंज किया है एंड एग्जिस्टिंग गवर्नेंस सिस्टम को भी वो चेंज करने की कोशिश कर रही है. उनके चीफ रेटिंग ऑफिसर्स हैं. तो ये सारे कुछ इनिशिएटिव्स जो हैं वो केयर ने रिसेंटली लिए हैं. इसके बाद the third case study which actually related to insider trading. In this case study various scenarios have been explained. One of the, you can say, the case study started with a CEO of a company which is actually worried about the insider trading. So is you can say the finance manager actually briefed him about the situation in which the insider trading is considered unwelcome, and he also apprises the CEO that in some situation insider trading is not bad. हर सिचुएशन में इंसाइडर ट्रेडिंग जो है वो बैड नहीं होता. वो कौन से सिचुएशंस होते हैं? तो इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कौन से वो सिचुएशन होते हैं जिसमें इंसाइडर ट्रेडिंग को हम खराब, बैड नहीं कह सकते. वो सिचुएशन होते हैं जिसमें जो इंसाइडर्स होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज को बता के शेयर्स में ट्रेडिंग करते हैं. क्योंकि जो कंपनी के इंसाइडर्स हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स हैं, जो की मैनेजरियल पर्सन है, उनको पता रहता है, उनको जो इंफॉर्मेशन जो पब्लिश नहीं हुई है, जैसे कि बोनस इश्यू करना है, कंपनी कोई मर्जर एंड एक्विजिशन प्लान कर रही है,
इसके रिगार्डिंग जो है टॉप मैनेजमेंट को या जो इनसाइडर्स जो हैं उनको मालूम होता है, तो ये स्टॉक एक्सचेंज को बता के फिर वो पर्टिकुलर शेयर्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इन दो सिचुएशन इट इज नॉट कंसिडर्ड बैड। Then, if you go through the SEBI regulations regarding insider trading carefully, you will see that the insiders can prepare a trading plan, get it approved by a compliance officer, and according to that trading plan, they can invest in the shares. So basically, third जो case study था वो इसके regarding ही था आपका। इसके बाद कुछ इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म जो है वो मैंडेटरी किए गए। सम ऑफ द इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म हैव बीन मेड मैंडेटरी which have to be executed by the companies to prevent insider trading in India. So what are those you can say mechanism? Means insider trading को रोकने के लिए कंपनी कुछ मैकेनिज्म बनानी होती है, वो मैंडेटरी है, तो वो रखना ही होता है कंपनी को। वो कौन से मैकेनिज्म्स हैं वो जो थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया, तो इसका आंसर आपके सेबी रेगुलेशंस में है, सेबी इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस। उसमें दिए गए हैं कि इफ chief executive officer, managing director, or any such person of a listed company shall place an effective system of internal control. तो internal control रहेगा तो insider trading को वो रोक सकते हैं। So internal control में क्या include होगा? तो next question arise होता है। Internal control में include होगा कि all those employees, सभी employees जो कि unpublished price sensitive information जो है उनके बारे में जानते हैं, और वो सभी जो अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उसको वो कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रखेंगे। एडिक्वेट रिस्ट्रिक्शंस होंगी अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पे और सारे एम्प्लॉइज और पर्संस जिनके पास अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो सकते हैं उनकी लिस्ट जो है वो रखी जाएगी, और एक पीरियोडिक इवैल्यूएशन सिस्टम जो होगा वो इंटरनल कंट्रोल पे रेगुलरली वो चीज होगा। अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के बारे में आप जानते होंगे। व्हाट इज द अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन? अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मींस एनी इंफॉर्मेशन which is price sensitive that is bonus issue, any mergers and acquisition, right issue, etc. So ये अगर unpublished है, unpublished means not in public domain. Unpublished means not in public domain. तो इंफॉर्मेशन जो है वो insiders के पास है। Insiders have access to these information. तो इन अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को मेंटेन करके रखना होता है, और एक लिस्ट बनाई जाती है कि जितने भी एम्प्लॉइज हैं वो जो जो इनके पास अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो सकते हैं उसकी एक लिस्ट बनाई जाती है, उनके ऊपर एक कंट्रोल रखा जाता है, पीरियोडिकल इवैल्यूएशन होता है इसका। उसके बाद हम आते हैं केस स्टडी 4 पे। केस स्टडी 4 भी इंटरेस्टिंग है बहुत, वो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस के ऊपर है। मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस वो क्या होते हैं? वो एक्चुअली कस्टोडियंस
clearing corporations, stock exchanges, डिपॉजिटरी होते हैं, इनको मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। तो जो फोर्थ केस स्टडी है वो हमारा मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस के रिगार्डिंग है, क्योंकि इसमें एक जो है जो कोलोकेशन केस था इसको डिस्कस किया गया है, और रिसेंट जो क्या इनिशिएटिव सेबी ने लिए हैं रिगार्डिंग दिस कस्टोडियंस, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, स्टॉक एक्सचेंज, वो सारी चीजें जो इसमें मेंशन की गई है। सबसे पहला तो जो पूछा गया है क्वेश्चन वो आपसे कि कोलोकेशन केस एक्चुअली है क्या। कोलोकेशन केस जैसे कि आप लोगों में से बहुत लोगों को मालूम होगा कि इसमें कुछ पर्टिकुलर ब्रोकर्स थे, उनको एक एक्सेस दिया गया था टर्मिनल में कि वो कोई भी ट्रेड शुरू होने के स्प्लिट सेकंड पहले उनको जो सारी जानकारी जो है वो मिलती, वो ट्रेड कर सकते थे स्प्लिट सेकंड पहले। तो वो एक कोलोकेशन फैसिलिटी था पर्टिकुलर सर्वर पे, तो उससे स्प्लिट सेकंड से ही कई ब्रोकरों को काफी इससे फायदा हुआ। तो इसमें बाद में पता चला कि इसमें चित्रा रामाकृष्णन जो है फॉर्मर जो सेबी के हेड थे, उनका भी इसमें इन्वॉल्वमेंट था। तो ये क्वेश्चन जो है पर्टिकुलरली इसके रिगार्डिंग ही पूछा गया है, जो फोर्थ केस स्टडी है। तो फोर्थ स्टडी में क्वेश्चन था कि व्हाट इज द कोलोकेशन केस ऑल अबाउट एंड हाउ इट हेल्प सम ऑफ द स्टॉक ब्रोकर्स इन इंडिया। सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि हाउ द कमिटी फॉर्म बाय सेबी होप टू ब्रिंग यू कैन से एथिकल एफिशिएंसी इन द वर्किंग ऑफ द मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस। तो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, उनकी एथिकल एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए सेबी ने कौन कौन से इसमें इनिशिएटिव्स लिए हैं। तो सेबी ने कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए हैं वो आपको इसमें डिस्कस करना है। इसमें सबसे पहले जो है सेबी ने कमर्शियल एस्पेक्ट को कवर किया है। कमर्शियल साइड मींस जो स्टॉक एक्सचेंज है या फिर एनएससी है वो एक कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सो इट्स पर्पस इज टू मेक प्रॉफिट्स, तो ये प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। सेकंड, टेक्नोलॉजी, it should use the latest technology and the technology should be such that it will cover the risk, means कोई भी इस तरह से सिस्टम को मैनिपुलेट ना करता, इस तरह से सिस्टम होना चाहिए। मेजर्स फॉर, थर्ड है मेजर्स फॉर इवैल्यूएशन। तो इसके जो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस है जैसे कस्टोडियंस है, स्टॉक एक्सचेंज है, डिपॉजिटरीज है, इनके जो काम करने के तरीके को कैसे इवैल्यूएट कर सकते हैं वो भी उसमें सेबी ने इस पे जोर दिया है। एंड ओमिशंस एंड कमीशंस, omissions and commissions. Omissions and commissions must be eliminated at all costs. Means committee's first focus will be to actually eliminate omissions. Means कोई भी ऐसी चीज जो कि पुट करना चाहिए स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे, एक्चुअली कोई इंफॉर्मेशन होना चाहिए वो नहीं है, वैसा दिस शुड नॉट बी द केस। सो एनी ओमिशंस एंड कमीशन शुड बी अवॉइडेड एट ऑल कॉस्ट। And lastly, framework means the governance system of the stock exchange should be such that it provides a benchmark for other organizations also. क्योंकि जो बेसिक इशू था जो कोलोकेशन केस में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वो था गवर्नेंस इशू, बिकॉज द सीईओ जैसे फॉर एग्जांपल चित्रा रामाकृष्णन who has been arrested recently has actually used the National Stock Exchange as his personal fiefdom, और उसमें ये भी एलिगेशंस थे कि उन्होंने अरविंद सुब्रमण्यम को हायर सैलरी पे प्रमोट किया। अरविंद जो सुब्रमण्यम थे वो केएमपी भी नहीं थे, की मैनेजरियल पर्सनल भी नहीं थे, फिर भी उनकी सैलरी बाकी की मैनेजरियल पर्सन से काफी ज्यादा थी। तो एक एथिकल इशू था, गवर्नेंस स्ट्रक्चर भी प्रॉपर नहीं था। Without any proper qualification, Arvind Subramaniam has been, you can say, promoted to a very high post in National Stock Exchange. तो ये सब कुछ governance issues भी थे, transparency issues थे और ethical issues भी थे। So that the SEBI committee has looked into market infrastructure के केस में SEBI ने इन चीजों को highlight किया है।
उसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो है वो है डिस्कस विद रेफरेंस टू प्रैक्टिकल इंस्टेंसेस एज टू द market infrastructure, how market infrastructure institutions will boost up the capital market in India. How market infrastructure institutions will boost up the market infrastructure institutions. जो recent initiatives SEBI ने लिए हैं, they are very good initiatives. The first is actually fixing the tenure of the managing director. तो मैनेजिंग डायरेक्टर का टेन्योर जो होगा वो फिक्स किया गया है कि वो 2 टर्म तक ही हो सकता है। तो इसमें क्या है कि कोई भी लंबे समय तक मैनेजिंग डायरेक्टर किसी कंपनी का हो नहीं सकता। तो एक उसके ऊपर शॉर्ट टर्म रहेगा और एक उसके ऊपर प्रेशर भी रहेगा कि जितने समय तक मैं काम करूंगा वो दैट शुड बी वो अच्छा काम करूं। तो एक टेन्योर फिक्स किया मैनेजिंग डायरेक्टर का। दूसरा है कि केएमपी को एक्सपैंड किया गया। Expansion of KMP. So you know KMP is key managerial person, means chief executive officer, chief financial officer, company secretary, whole-time director. These are actually the key managerial person. You can say they are the KMPs. Okay. So KMPs को और बढ़ाया गया। मतलब KMPs में क्या क्या इंक्लूड किए गए हैं? वो लोग इंक्लूड किए गए जो कि सीईओ को रिपोर्ट कर सकते हैं, और 2 लेवल जो KMP से नीचे हैं, 2 लेवल जो सीईओ से नीचे हैं उनको भी KMP में लाया गया। तो इसका मतलब KMP का दायरा बढ़ाया गया। सो KMP का दायरा बढ़ाया गया। तो व्हाई दिस हैज बीन डन? दिस हैज बीन डन टू एक्चुअली you can say bring more transparency in the governance. Just give me a second. So जो की मैनेजरियल पर्सन को जो एक्चुअली एक्सपैंड किया गया है उसका पर्पस ये भी था कि उनका जो कंपनसेशन है वो फेयर होना चाहिए, क्योंकि केएमपी का जो रिम्यूनरेशन है उसके रिगार्डिंग आपको कंपनी को उसको अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको देना होता है। तो अगर उसका दायरा बढ़ाया जाएगा तो मालूम चलेगा कि एक्चुअली केएमपी जो कितना कितना रिम्यूनरेशन पा रही है। तो ये एक चेक रहेगा मैनेजमेंट के ऊपर कि बहुत सारे ज्यादा जो है हाई सैलरी अनडिजर्विंग लोगों को वो न दे पाए, जो कि एक्चुअली एनएसए की केस में हुआ था। उसके बाद जो इंटरनल कमिटीज हैं, इंटरनल कमिटीज reduced from 15 to 7। सो ये चीज क्यों किया गया? 15 to 7 को इसलिए रिड्यूस किया गया जिससे काम की एफिशिएंसी और बढ़े। तो कमिटीज को रिड्यूस किया गया किसी भी कंपनीज के 15 से 7 कर दिया गया इन द केस ऑफ मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस। Now come to the last case study number 5, which is actually divided into 2 parts. The A part consists of the recent initiative taken by SEBI to provide, you can say, to enable the retail investors to invest after getting all the information in a brief format. तो उस चीज को कैसे किया गया कि ब्रीफली सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इन्वेस्टर्स को दिया जाए। इन्वेस्टर जब भी कोई आईपीओ में इन्वेस्ट करता है तो उसको प्रोस्पेक्टस को पढ़ना पड़ता है डिटेल में। अब सेबी ने क्या किया है कि सेबी ने मैंडेट किया है कि एप्लीकेशन फॉर्म के साथ एक एवरेज प्रोस्पेक्टस होगा। एवरेज प्रोस्पेक्टस जैसे कि नाम से लग रहा है एवरेज, मतलब प्रोस्पेक्टस का शॉर्टर फॉर्म। तो अगर आप एवरेज प्रोस्पेक्टस को पढ़ेंगे तो प्रोस्पेक्टस से काफी छोटा होता है, तो उसमें एवरेज प्रोस्पेक्टस को देखने से आपको मालूम चल जाएगा कि क्या क्या चीजें जो है रिलेवेंट है कंपनी के रिगार्डिंग। तो रिटेल इन्वेस्टर्स जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए एक एडवांटेज है कि वो
एवरेज प्रोस्पेक्टस को पढ़ सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ एवरेज प्रोस्पेक्टस को तो देना ही, उसके अलावा कंपनी को अपना एवरेज प्रोस्पेक्टस अपने वेबसाइट में देना होगा। ओके, मर्चेंट बैंकर्स को तो देना होगा, रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर इश्यूअर्स को भी देना होगा। तो ये रिसेंट इनिशिएटिव जो है सेबी ने लिया है रिटेल इन्वेस्टर्स को हेल्प करने के लिए। तो इसके रिगार्डिंग जो है केस स्टडी 5 आपका है। ये पार्ट ए है। पार्ट बी है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। थोड़ा सा टेक्निकल है पार्ट बी आपका, जो रिवर्स रिपो, रिपो और जो आपका सेकंड केस स्टडी है उसके मिक्स है, सारी चीजों को इंक्लूड करके केस स्टडी को बनाया गया है पर्टिकुलर। इसमें क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने इन्फ्लेशन को रिड्यूस करने के लिए, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, इन्फ्लेशन कब होता है, मनी सप्लाई ज्यादा होता है, तो मनी सप्लाई को कम करने के लिए एक्चुअली क्या किया है इन्होंने, रिवर्स रिपो की जगह फिक्स्ड रिवर्स रिपो की जगह वेरिएबल रिवर्स रिपो को यूज किया है। ठीक है ना। रिवर्स रिपो क्या होता है, रिवर्स रिपो को पहले आपको रिपो जानना जरूरी है। रिपो होता है कि वो रेट जिसपे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक को लेंड करती है, कमर्शियल बैंक को लोन देती है, दैट इज रिपो। व्हाट इज रिवर्स रिपो? रिवर्स रिपो उसका रिवर्स, उसका उल्टा, जिस रेट पे कमर्शियल बैंक्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लोन देती है। तो रिवर्स रिपो इज द रेट एट विच द कमर्शियल बैंक्स लेंड टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो फिक्स, तो वेरिएबल रिवर्स रिपो अगर रखेंगे तो उसमें फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि आरबीआई जो है ज्यादा से ज्यादा पैसा खींच सकती है कमर्शियल बैंक से। अभी मनी इन्फ्लेशन को रोकने के लिए मनी सप्लाई को कम करना है, पैसे को कम करना है, तो पैसा ज्यादा से ज्यादा कमर्शियल बैंक से खींचना है। वो कैसे खींच सकते हैं? अगर रिवर्स रिपो रेट को बढ़ाएंगे। वेरिएबल रिपो क्या होता है, सर्कमस्टेंसेस के अनुसार वो चेंज होता रहता है। तो फिक्स रिपो, फॉर एग्जांपल अगर फिक्स रिवर्स रिपो 5.5 होगा तो वेरिएबल जो है उससे ज्यादा ही होगा, 6%। तो इससे फायदा क्या होगा? इससे ये होगा कि रिवर्स रिपो रेट क्या है, जिसपे कमर्शियल बैंक लेंड कर रही है आरबीआई को। तो 5, अगर 5 फिक्स रिवर्स रिपो रहेगा तो अगर कमर्शियल बैंक आरबीआई को लेंड करती है तो उसको 5.5% मिलेगा। ओके, पर अगर वेरिएबल होगा तो उसको 6% मिलेगा, तो उसको इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है। तो अगर बैंक्स को अगर इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है तो वो ज्यादा लेंड करेगी। तो इससे क्या होगा, ज्यादा लेंड करेगी तो आरबीआई जो है ज्यादा से ज्यादा पैसा कमर्शियल बैंक के पास, कमर्शियल बैंक से खींच सकती है। तो मनी सप्लाई कम होगा, मनी सप्लाई कम होगा तो इन्फ्लेशन कम होगा। तो वेरिएबल रिवर्स रिपो रेट को आरबीआई जो है वो पहले भी इसको अपना चुकी है, फिर से इसको रिपीट किया है। तो ये जो पर्टिकुलर केस स्टडी है वो इस पे जो है वो केंद्रित है। इट हैज बीन फोकस्ड ऑन दिस एस्पेक्ट दैट आरबीआई इन ऑर्डर टू रिड्यूस इन्फ्लेशन, in order to reduce the money supply, has been using the variable reverse repo instead of using the fixed reverse repo। तो इसके बेसिस पे जो है क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। यू विल दोस हु हैव नॉट अटेम्प्टेड द मॉक टेस्ट पेपर, प्लीज ट्राई टू अटेम्प्ट इट। ओके, and if any question come across, please you can say revert to us, write to us, and we will be happy to answer your queries on that. So thank you so much. Thank you for your patient listening. Thank you so much. Done.